हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रिपेरेशन पूरा जोरदार चलुचे समस्तंकर एग्जाम आ बहुत ही कम दिन रहिला समस्तंकर। ओके वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करिबा। ओके तो वेरी गुड मॉर्निंग आमर हिस्ट्री ज्योग्राफी आउ कौन पॉलिटी रो आम स्टार्ट कर सारे। आज आमर हिस्ट्री तो ऑलरेडी सरी सारे। आज आम पॉलिटी स्टार्ट करवा माने पॉलिटी रो कौन क्वेश्चन आंसर गुड़ाक डिस्कस करवा। मैम पीवाईक्यू आणतु पीवाईक्यू ही चली तो आपण मानकर चैप्टर वाइज बोथ पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू डिस्कस होची एबे। ओके तो ए जाए आम कौन कौन करूँ जस्ट मुझे गोटे माने क्विक रिव्यू दे दूची। एइथरो जदि किसी डाउट अच्छी ताहले आपण माने कहिबे ठीक अच्छे। हिस्ट्री हिस्ट्री रो आमे कौन देखिला एंशिएंट हिस्ट्री। ओके एंशिएंट हिस्ट्री को पुणी आमे 3 टाइप रे देखिला। ओके गोटे हला पैलियोलिथिक, गोटे हला मेसोलिथिक आ गोटे हला कौन नियोलिथिक। ओके नियोलिथिक तापरे लेटर ऑन रे पुणी कौन देखिला आमे चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक देखिला क्लियर। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही आछी आपण मानकर पीवाईक्यू बेस्ड आसुची ता सहित एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी आछी ताकि आपण मानकर वॉइस टिके लो होची। अच्छा वॉइस ठीक से सुभा जाउनी कि क्लियर नहीं। एसएसटी रो गोटे प्लेलिस्ट कर दियंतु। अच्छा एई गुडा को नेकी मु गोटे प्लेलिस्ट बनै देबी आज। ओके तो तापर कोन हला हमर चाल्कोलिथिक पीरियड आसिला देन आसिला हमर वैदिक एज। ओके वैदिक पीरियड वैदिक रे हमें कोन देखिला लेटर वैदिक आउ कोन ना फर्स्ट अर्ली वैदिक देखिला सॉरी फर्स्ट अर्ली तापर लेटर। ओके फर्स्ट हमें देखिला अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक ठीक अच्छे क्लियर। एतिके सरला परे कलर चेंज करंतु को कलर करबा। ओके ए कलर ग्रीन विल बी गुड। रवि तुम एते राग कहीं हाँ मैराथन क्लास तो डेफिनेटली आनिबा बाकी एई गुडा का सरी जाऊ हमर थरे क्लास रो सब चैप्टर वाइज ओवरव्यू सरी जाऊ देन हमें मैराथन नहीं के आसीबा। ओके हाँ तापर अर्ली आ लेटर गला अर्ली वैदिक लेटर वैदिक गला तापर हमर एंशिएंट हिस्ट्री एठी हमें सारी की तापर कोन आसिला ना मेडिवल हिस्ट्री को मो हिसाब रे हमें 3टा टाइप रे डिवाइड करिथिला फर्स्ट सेकंड थर्ड किंतु हमें सेकंड स्टेज टा को गुरुत्व देइथिला जोठी कि हमर दिल्ली सुल्तानेत आसीथिला। ओके ओके हाँ जोठी कि हमर दिल्ली सुल्तानेत आसीथिला बा दिल्ली सुल्तान ठीक अच्छे। दिल्ली सुल्तान रे पुणी एटा हमें 5 टाइप रे डिवाइड करिथिला 4 and 5 कौन कौन ना स्लेब डायनेस्टी जहाँ को हमें मामूलकर डायनेस्टी कहूचु। स्लेब पर आसीथिला खिलजी तुगलक पर कौन आसला शायद एंड लोधी बा लोधी। ओके क्लियर क्लास एबे ही स्टार्ट होइछि 10-15 मिनिट्स होइछि तो एतिकी सरिला हमर मेडिवल हिस्ट्री किए कौन केतेबेले राजत्व करथिले तापरे मोगल मानकर एंट्री केतेबेले हला अफगानी माने केते वर्ष शासन करुथिले एई सब हेई सला परे हाँ आर्य समाज ब्राह्मण समाज रो गोटे 2टा क्वेश्चन आसीबो सेटा भी हमें डिस्कस करबा। ओके हाँ एटा सरिला परे तापरे हमें कौन देखिला हमर मेडिवल हिस्ट्री सरिला देन हमें आसिला टिके जस्ट मु देखि दोची मेडिवल हिस्ट्री पर हमें फ्रीडम मूवमेंट्स इन इंडिया देखिथिला। ओके फ्रीडम मूवमेंट्स इन इंडिया
मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक अच्छे जो 1600 मसीह ब्रिटिशर्स माने आसिले केबे आसिले 1600 रे आसिले तापर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश कले सूरत रे तांकर फर्स्ट इंग्लिश कंपनी हेइतिला। ठीक अच्छे इंग्लिश कंपनी सूरत रे ही सारा पर धीरे धीरे से डोमिनेंस स्टार्ट कले आ तांकर डोमिनेंसटा कोठू बढ़िला ना बेंगल पार्टीशन रू बढ़िला डोमिनेंसटा बेंगल पार्टीशन रू बढ़िला कहीं ना सिराजुद्दौलांकर जीए अति निजर लोक थिले मीर जाफर से तांको धोखा देइथिले तापरे सेमती तांकर डोमिनेंसटा बढ़िथिला तापरे दीवानी राइट आसीथिला जोटा कि तांकर रेवेन्यू सिस्टम रो गोटे पार्ट थिला। ओके धीरे धीरे सेमती हिके समाने तांकर आधिपत्य विस्तार करिथिले एंड महात्मा गांधी आस्थिले 1915 रे इंडिया को आस्थिले तापरे धीरे धीरे फास्ट तांकर लोकलाइज्ड माने से देश को जानिबा पई लोकली गोटे कोन स्ट्रगल स्टार्ट कले आ फास्ट सत्याग्रह स्टार्ट करथिले जोटी कि तांकर थिला चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ओके चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हैला परे सेटा कोन पई थिला मु बुझी पारुनी कोन पई बुझी पारुन मु एठी आज जाय हम कोन कोन पढी जो सेटार गोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देउची आपण माननकु। ओके हाँ चंपारण सत्याग्रह कोन पई हितला ना इंडिगो कल्टिवेशन पई हितला तापरे धीरे 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 सेटा माने समाने चंपारण परे धीरे धीरे कोन हला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दांडी मार्च तापरे कोन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हेतिला तापरे चोरी चोरा आंदोलन हेतिला। यस चोरी चोरा आंदोलन पर कोन हला ना जेते बेले जाईकरी चोरी चोरा रे जेल जळे देथिले तापरे कोन से आंदोलन रु महात्मा गांधी ओहरी जाइथिले जोटी कि सुभाष चंद्र बोस ताना देथिले। ठीक अछि एमती हे लास्ट को 1942 रे 1942 रे कोन हला ना क्विट इंडिया मूवमेंट हेतिला तो ए पर्यंत जाइथिला आमे एई सबु भितरे तापर हमर आसिला कॉन्स्टिट्यूशन बनेबार काम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक अछि हाँ चंपारण पर खेड़ा हेतिला। ओके यस वेरी गुड पुना पैक्ट आसीथिला लखनऊ पैक्ट आसीथिला। ठीक अछि मुस्लिम लीग पई सेपरेट इलेक्ट्रोलेट बाय इलेक्ट्रल सभा पई डिसाइड करिथिले तो हमर एंड हितला 1942 रे क्विट इंडिया मूवमेंट तापर 1947 रे कोन हेतिला ना इंडिपेंडेंस पई दाबी करा हेतिला जोटा कि पास मध्य हे जाइथिला। ठीक अछि तो एतिकी हम माने अल्प बहुत एतिकी आमे पूरा कवर करिजु तार पीवाईक्यू गुडा को सब डिस्कस करा हबा सहित एक्स्ट्रा एमसीक्यू गुडा को मध्य करा हिची। एबे आमे कोन देखिबा ना हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउ तार फीचर। ठीक अच्छे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आउ तार फीचर्स गुडा को देखिबा जोटा कि या परे आमे कंसीडर करि थाउ। ठीक अच्छे तो हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउ तार फीचर्स रे कोन अछि द फ्रेज वी कलर चेंज करूची। ओके द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रीएम्बल सिग्निफिकेंस दैट कौन कहा को शो करे जिते बेले आमे फीचर्स कथा कहूँ वी द पीपल ऑफ इंडिया सेटा कहा को शो करुची सोवेरेनिटी रेट्स विथ पार्लियामेंट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल इंडिया इज ग्रिप फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी कहा को शो करुची पिला माने जल्दी आंसर दियंतु वी द पीपल ऑफ इंडिया जोटा आम प्रिएम्बल अच्छे से क्या शो करुच्ची ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव द अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। यस वेरी गुड ओके देन आसिला द प्रिएम्बल इज कंसीडर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर हेल्ड इन को पार्ट रे अच्छी जिते बेले आम प्रिएम्बल इज कंसीडर एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज हेल्ड इन कोठी ना केशव भारती स्टेट ऑफ केरला 1973 ना बेरुवारी यूनियन केस 1960 ओके गोलकनाथ वर्सेस स्टेट पंजाब 1967 ना मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 कोठी पिला माने ऑप्शन ए केशव नंदा भारती केस रु हमर प्रिएम्बल टाको कोन माने गोटे अंश भाव रे विवेचना करा हिची। ओके देन आसिला हमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द amendable in the preamble according to the केशव नंदा भारती केस कोटा आमर amendable नाही केउ प्रस्तावन रे संशोधित नुहे सोशलिस्ट कैरेक्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कैरेक्टर वर्डिंग एंड इंटीग्रिटी क्लॉज
केउ प्रस्तावनाटा संशोधित नुहे केउ प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी रे क्लास देखा होची तो हम ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दीटा भितर कोटा हबो ऑप्शन बी हमर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ओके वेरी गुड okay then next asila which amendment inserted the word socialist secular and the integrity into the preamble जेते बेले आमे सोशलिस्ट सेक्युलर आ इंटीग्रिटी कथा कहूछु सेटा को अमेंडमेंट थ्रू रु आस्तला 42 अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट 1978 24th अमेंडमेंट 1971 एंड 61st अमेंडमेंट 1989 मु आपण मानको गोटे क्लू दे दोची ए दीटा हबनी तो ए दीटा भितर कोटा हबो आपण माने कहंतु ओके quick 42 amendment 1976 very good okay the Indian federal system is often called quasi federal primarily because ko pai taku quasi federal कहा जाए division of power between center and state single citizenship strong unitary bias with residuary power to the center and the last one is existence of written constitution quasi federal kon pai कहा जाए क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करबी ओके ओके क्वेश्चन नंबर 1 कोन थिला ओके द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रिएम्बल सिग्निफाइज दैट कोन सिग्निफाइज करे प्रस्तावना रे आमे भारतर लोक कौन सूचित करे कहा को सूचित करे ओके ऑप्शन ए सोवरेनिटी रेस्ट विथ पार्लियामेंट जहाँ को हमें कहूँ सार्वभौमत्व संसद ऊपर निर्भर करे ना द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव एज ए अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल जोटा को हमें ओडिया रे कहूँ संविधान लोक मान ठारू अधिकार पाई थांती ठीक अच्छे then the third one is India is a gift from British Parliament India होचे British Parliament रो गोटे gift and the president is the ultimate authority प्रेसिडेंट पाखरे माने अल्टीमेट अथॉरिटी अच्छी चरम कर्तृपक्ष प्रेसिडेंट बोली कह जाउची तो एटा कोन हबो ना सोवेरिएंट रिसेट्स विथ पार्लियामेंट एटा तो हबनी पार्लियामेंट पाखरे कोन सार्वभौमत्व संसद ऊपर निर्भर करेनी नेक्स्ट आसिला इंडिया इज गिफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट आम इंडिया केबे ब्रिटिश पार्लियामेंट रो गिफ्ट ही नथिला प्रेसिडेंट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी प्रेसिडेंट अल्टीमेट अथॉरिटी नुहंती बिकॉज वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री दो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किंतु प्रेसिडेंट को पाखरे अथॉरिटी नाही देन तो कौन हबो इंडिया इज ए गिफ्ट नहीं सॉरी द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स द अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ठीक अच्छे संविधान लोक मानक ठारू अधिकार पाई थाए ओके क्लियर हाँ तो आमे जो क्वेश्चन डिस्कस करूला सोशलिस्ट गला तापर आसिला कोन क्वाजी फेडरल कहा को कहा जाए ऑप्शन बी सिंगल सिटीजनशिप नो स्ट्रांग यूनिटरी बायस with the residuary power to the center पाखरे सबुठारु अधिक रेसिडुआरी पावर अच्छे कहीं ना आमे गोटे कौन त्रिस्तरीय शासन रे जाउछु कौन कौन ना आमर गोटे सेंटर अच्छी सेंटर स्टेट एंड लोकल ठीक अच्छे आमर टर्सियरी सेक्टर माने टर्सियरी कौन शासन व्यवस्था अच्छी सेंटर स्टेट आउ लोकल ओके जेहेतु आमे सेंटर स्टेट आउ लोकल हिसाब रे आमे आमर इलेक्टोरेट करू बा निर्वाचन करू तो सबुठारु अथॉरिटी समस्त बेसी पावर कहा पाखरे अच्छे रेसिडुआरी पावर अच्छे सेंटर पाखरे तो सही हिसाब रे एटा को हमें क्वाजी फेडरल बोली कहि थाउ ओके क्लियर देन द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज आर्टिकल 1 रे इंडिया को को हिसाब रे डिस्क्राइब कराई छी ए फेडरेशन ऑफ स्टेट ए यूनियन ऑफ स्टेट ए कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट ए यूनिटरी स्टेट विथ फेडरल फीचर्स कौन हिसाब रे वर्णना करा हिची को हिसाब रे कहा आमर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को आर्टिकल 1 रे केमिति डिस्क्राइब करिछि आमर आंसर हिजिबो ऑप्शन बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट ओके then which schedule of the constitution deals with distribution of power between union and state जेते बेले हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कथा कहूछु
को शेड्यूल हिसाब रे पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और यूनियन भितर करा हिची 5th शेड्यूल 6th 7th एंड 9th शेड्यूल को शेड्यूल हिसाब रे दिस इज योर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके तो को हिसाब रे हिची ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू आवर 7th शेड्यूल ओके देन द टर्म रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल इम्प्लाइज जो आम टर्म रिपब्लिक बोली कहूचु सेटा कहा को इम्प्लाइज करे हेरिडिटरी हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी माने वंशानुक्रमिक हेड ऑफ द स्टेट ठीक अच्छे देन द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट फॉर ए फिक्स्ड टर्म ओके देन हेड ऑफ द स्टेट नॉमिनेटेड बाय द पार्लियामेंट एंड नो हेड ऑफ स्टेट कहा को कहा जाए द टर्म रिपब्लिक कहा को कहा जाए जिते बेले आमे रिपब्लिक कथा कहूचु इलेक्टेड द हेड ऑफ स्टेट फॉर द फिक्स्ड टर्म ठीक अच्छे किछि एक निर्दिष्ट कार्यकाल पई आमे इलेक्ट करि थाउ आमे पुनी से कार्यकालटा ताकर सरी गले आउ थरा हम पाकरे इलेक्ट करिवार चांस थाए तो द टर्म रिपब्लिक हमर रेफर करूची कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट विथ ए फिक्स्ड टर्म ओके देन द concurrent list was inspired by which country's institute which country constitutions जिते बेले आमे concurrent list कथा कहूचु सेटा कोठु आछि USA कनाडा ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड कोठु आछि concurrent list कोठु आछि हमर कोन हि जिवो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया USA रु कोन आछि मते कह ब्रिटेन रु आछि कोन पार्लियामेंटरी सिस्टम USA रु आछि फंडामेंटल राइट्स कनाडा रु आछि फेडरलिज्म आयरलैंड रु आछि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो ऑस्ट्रेलिया रु आछि कोन हमर कंकरेंट लिस्ट क्लियर then the case of conflict between union and state law of a concurrent list subject which prevails the subject to expectation under the article 254 को article under the article 254 रे कहा को कहा हिची state law always union law always जदि state union और state भितर किछि conflict हैला हमें कहा को consider करिबा yes हाँ तो आमे कहा को कंसीडर करबा whichever was elected first the matter goes to the president माने जदि सेंटर और स्टेट भितर यूनियन और स्टेट भितर जदि कोनोसी कॉन्फ्लिक्ट देखा गला कोनोसी लॉ को नेकी कहाटा आमे कंसीडर करबा स्टेट को सब बेले करबा ना यूनियन लॉ को करबा ना जोटा फर्स्ट इनेक्ट हला ताहा को करबा ना प्रेसिडेंट जहा को कहबे ताहा को करबा कहा को करबा ना ऑप्शन बी आमे सब बेले यूनियन लॉ को कंसीडर करिथाउ ठीक अछि द डॉक्टरिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंसेस इज यूज्ड टू कहा को कहा जे एटा भी आपण मानकर PYQ ओके डिटरमाइनिंग द ट्रूथ नेचर ऑफ लेजिस्लेशन फॉर जुडिशियल पर्पस रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP इंटरप्रेट द प्रीएम्बल डिटरमाइन द बेसिक स्ट्रक्चर कहा को कहबा आपण माने जदी किए भी करिथिबे PYQ ए गुडा को आंसर दे परिबे एटा आपण मानकर PYQ रे थिला ना नै किए देखि चंदी ए क्वेश्चन यस ऑप्शन ए डिटरमाइन द ट्रू नेचर ऑफ लेजिस्लेशन फॉर जुडिशियल पर्पसेस ओके देन असला व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 249 250 252 एंड 253 कोन हबा आंसर हमारा आंसर हबो ऑप्शन बी आर्टिकल 250 नेशनल इमरजेंसी ओके देन आर्टिकल 249 allows parliament to legislate on a state list subject if the president declares emergency Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority 2 or more state request it and the Supreme Court permits it कौन हबो आंसर आमर धारा 249 हिसाब रे संसद को एक राज्य तालिका विषय उपरे आईन प्रणयन करबा को अनुमति को परिस्थिति रे जिया जाए ओके तो
तो हमर ऑप्शन बी हेबो राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी जदि राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी रे रिजोल्यूशन पास कला देन हमर हेई परिबो ओके व्हिच फंडामेंटल राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय द अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन PYQ also कहा को हार्ट एंड सोल कहा जाउची right to equality, right to freedom, right to constitutional liberty and right to against exploitation. तो हमर आंसर कोन हबो ऑप्शन सी right to constitutional remedy according to the article 32. Okay, fundamental rights are contained in which part of the constitution? को पार्ट रे हमर फंडामेंटल राइट्स को देखिबा को मिले पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A. हमर आंसर कोन हबो पार्ट 3. ओके, पार्ट 3 हेबो पार्ट 4 रे हमर कोन अछि फंडामेंटल राइट्स हमरो पार्ट 3 रे अछि पार्ट 4 रे अछि फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A रे अछि हमरो फंडामेंटल ड्यूटीज ओके then the right to property was removed from the fundamental right by which amendment and made legal right under which article okay को amendment रो yes YouTube रे ही चालू छि PYQ ओके एटा भी आपण मानकर PYQ तो को आर्टिकल रे हमर फंडामेंटल राइट्स रो प्रॉपर्टी राइट को बाहर करा जाय कि लीगल राइट्स रे रखा हितला 42 अमेंडमेंट आर्टिकल 300 44th अमेंडमेंट आर्टिकल 300A 24 अमेंडमेंट आर्टिकल 31A एंड 86 अमेंडमेंट आर्टिकल 21A को आर्टिकल हिसाब रे को आर्टिकल हिसाब रे ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट आर्टिकल 300A हिसाब रे हमें लीगल राइट्स हिसाब रे रखिछु ओके which case establish the fundamental rights can be amended but not the extent of destroying the basic structure ठीक अछि बेसिक स्ट्रक्चर को हमें डिस्ट्रॉय करबानी बोली किए कहितले गोलोकनाथ केस कहा केस परे केशवनाथ भारती केस मिनर्वा माइल्स केस एंड शंकरी प्रसाद केस को केस हमर आंसर हबो केशवनाथ भारती केस ओके आर्टिकल 21 was expensively interpreted to the include right to livelihood in which landmark case आमे livelihood कथा देखु छु जदी को लैंडमार्क केस रे अछि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओके मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओगल्स टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस A.K. Gopalan versus State of Madras and Francis Corali versus Union Territory of Delhi कहा कहा मध्य रे अछि जल्दी क्विक आंसर ऑप्शन बी ठीक अछि ओल्गा तेलिस वर्सेस कहा बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑप्शन बड़ तो देखा जाउनी भी अच्छा ऑप्शन कोन बड़ देखा जाउची ओके the concept of procedure established by law under article 21 was reinterpreted to align with due process of law in A.K. Gopalan case मेनका गांधी केस 1978 केशवनाथ भारती केस 1973 और इंदिरा गांधी वर्सेस नाज नारायण केस 1957 हमर आंसर कोन हो मेनका गांधी केस ओके देन which right is issued to prevent a subordinate court from the exceeding its jurisdictions habeas corpus mandamus prohibition and last one is kono na satiorao option C prohibition okay then the right of quo warranto is issued to quo warranto कौन पे issued ही थे release a person illegally detained question the legal authority of the person holding a public office command performance of the public duty and quash an order already passed
Option B. Okay. Question of legal authority of a person holding a public office. Article 32 and Article 226 both provides for right jurisdiction, but the key difference is कौन right jurisdiction को provide करंती किंतु तांको भितर key difference कौन ना Article 226 is a broader in scope regarding grounds. Article 32 applies only to state. Article 226 cannot be used for fundamental rights, and Article 32 is available only of citizen. कौन हबो Article 32 applies only to state. Okay, जेतेबेले आमे Article 32 कथा कहूचु सेटे खाली state रे apply हुए किंतु 226 वो state and center दीट जगह यूज हुए. तो this is the key difference. Okay, no, our answer is option A. Article 226 is border in scope regarding the grounds. Sorry मु एटा टिके भूल कहि देली. Article 226 is broader in scope and regarding the grounds. Okay, ना एटा टिके डाउट अछि, एटा टिके स्टार करि था मु नेक्स्ट क्लास रे आपण मानको टिके क्लियर करि कि कहिबी. ओके, एटा किछि गोटे डाउट अछि तो एटा मु आपण मानको आउथरे डिस्कस करिवि. Which fundamental rights is available only to the citizen, not to the foreigners? को fundamental rights खाली citizen पाई थाए किंतु foreigners पाई नहीं. Right to live Article 21, right to against exploitation Article 23, freedom of speech and expression Article 19, and the last is Article constitutional remedies Article 32. कोटा खाली Indian मानंको पाई किंतु foreigner मानंको पाई available नुहे. Only to the citizen of the country, like हमरा Indian मानंको पाई किंतु foreigner मानंको पाई नुहे. Article freedom of speech and expression Article 19. Okay, 8 हमें foreigner मानंको पाई देनु. Then the next is the directive principle of state policy contained in which part? जेतेबेला हमें DPSP कथा कहूचु सेटा को पार्ट रे अछि? Part 3, Part 4, Part 4A and Part 5. को पार्ट रे अछि? एटा हमर Part 4 रे अछि. Okay, then DPSP are described in Article 37 as को हिसाब रे describe करा हिची justiciable and enforceable by court. Fundamental is governance but not enforceable by any court, binding on the president only and superior to fundamental rights. DPSP रो अर्थ कौन? According to the Article 37 कौन हिसाब रे describe करा हिची? Option B, fundamental in governance but not enforceable by any court. Okay, then the next question is the 42 amendment gave precedings to which directive principles over certain fundamental rights Article 14 and 19. No, सबु आंसर B है नहीं. आपण टिके भलरे चेक करंतु. मैक्सिमम B थाई पारे किंतु सबु आंसर B नाही. ओके, Article 39B and Article 39C, Article 45, Article 48 and Article 44. ऑप्शन हमर आंसर कोन हबो? आंसर हबो Article 39B and Article 39C. जे भी आंसर ए कहि चंती वेरी गुड. Okay, then the Minerva Miles case the Supreme Court held at कोठी ना DPSP are always superior to fundamental rights. The harmony and the balance between fundamental rights and DPSP is a part of basic structure. DPSP cannot influence judicial interpretations, and the last is Article 368 has no limitation. कौन आंसर कौन हबो ना? ऑप्शन बी, द हार्मोनी. ठीक अछि, हार्मोनी माने कौन? मौलिक अधिकार हमर जो द हार्मोनी एंड द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. तो कौन हबो हमर मौलिक अधिकार आ DPSP मधरे हार्मोनी माने समन्वय एवं संतुलन मौलिक ढांचार एक अंश. ठीक अच्छे, दीटा जाक भितर केमिति संतुलन रहिबो समन्वय रहिबो सेही कथा हमर मिनर्वा माइल्स केस सुप्रीम कोर्ट रे कहा जाइथिला, माने कंक्लूड हेइथिला. ओके, व्हिच आर्टिकल्स डील विथ
deals with Union Civil Code as a directive principles. ठीक अच्छे यूनियन सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल सहित को आर्टिकल डील करिछि 44 48 45 एंड 39 एटा आपण मानकर PYQ ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला सो आंसर according to the article 44 very good according to the article 44 very good okay. Then the fundamental duties were added to the constitution by which amendment based on the recommendation of which committee ठीक है को कमिटी रो recommendation through रहितला 42 amendment स्वर्ण सिंह कमिटी 44 amendment सरकारिया कमिशन 61st amendment भर्म कमिटी ठीक है वर्मा कमिटी एंड 86 amendment बलवंत राय मेहता कमिटी कौन होगा आंसर ओके ओके आपण माने चिंता करंतुनी जस्ट मु आपण मानकर क्लास टा सारी दे आपण मानकु सब कहूची ओके हमर ऑप्शन है 42 amendment act स्वर्ण सिंह कमिटी ओके then how many fundamental duties were originally added and how many exist currently केतेटा हमर ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स थिला आ एबे केते अछि फंडामेंटल ड्यूटीज ओके 8 ओरिजिनली थिला एबे 10 ही जाइछि ना 10 टा थिला 11 टा हिछि ना 11 टा ओरिजिनली थिला एबे भी 11 टा अछि ना 10 टा थिला ओरिजिनली एबे 10 टा अछि केते हमर कोन हबो ऑप्शन बी ओरिजिनली 10 टा थिला किंतु एबे 11 टा ही जाइछि ओके then which fundamental duty added later by the 86th amendment 2002 को फंडामेंटल ड्यूटी टा ऐड करा हिची जोटा 10 टा थिला 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज कोन थिला ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चाइल्ड एज 6 to 14 एंड ड्यूटी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी तो आंसर कोन हबो ऑप्शन सी duty of parents and guardian to provide education to child between the age of 6 to 14 okay. Then the fundamental duties are model of the constitution of which country fundamental duties कथा जते बेले कहूछु सेटा को कंट्री रो आना हिची USA USSR जापान एंड कनाडा fundamental duties कोठु आछि हमर USSR okay. Then which article empowers the president to issue ordinance when parliament is not sanctioned parliament sanction न हबा गुरु को article टा empowers the president to issue ordinance okay article 121 123 143 and 356 आंसर को हबो article 123 okay. Then an ordinance issue under article 123 must be approved by parliament within how many week of reassembly केते दिन भितरे ताकू कंसीडर करा हबा कथा 4 week 6 week 8 week and 12 week PYQ ओके केते week भितरे हमर ही जिवो 6 week within the 6 week ताकू पास करबा कथा in the SR Bomi case the Supreme Court in the down guidelines primarily concerning फंडामेंटल राइट्स मिसयूज ऑफ आर्टिकल 352 जोटा के प्रेसिडेंट्स रो रूल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड मनी बिल्स कौन हबो क्विक आंसर हबो मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 ओके द 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 मेड हुई सिग्निफिकेंट चेंज रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 को सिग्निफिकेंट चेंज अना हितला remove internal disturbance and substitute armed rebellion okay reduce parliament's term to 5 year restore right to property as fundamental rights and introduce judicial review of emergency proclamation ko haba option A remove internal disturbances and substitute armed rebellion ठीक अच्छे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को आर्म रिबेलियन थ्रू रु सब्स्टिट्यूट करा ही जाऊ ओके एट चेंजेस आसीतला देन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी व्हिच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन अंडर 359 को फंडामेंटल राइट ए माने कोन इमरजेंसी टाइम रे भी सस्पेंड करा जाई परिबनी ओके कैन नॉट बी सस्पेंडेड आर्टिकल 19 आर्टिकल 20 एंड 21 आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 32
को फंडामेंटल राइट्स आमर आसीबो आर्टिकल 20 एंड 21 तो योर क्वेश्चन इज आर्टिकल 20 एंड 21 रे को फंडामेंटल राइट्स अछि आर्टिकल 20 एंड 21 रे को फंडामेंटल राइट्स अछि then the financial emergency under article 360 has been invoked how many times in Indian history केते थरा हेछि आमर जते बेले फाइनेंशियल इमरजेंसी देखा हेछि इंडियन हिस्ट्री केते थरा देखा हेछि once twice never or thrice बा 3 टाइम केते टाइम लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओके हाँ केते टाइम देखा जाइछि ना आमर नेवर ओके द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेटेड इन व्हिच केस जेते बेले आमे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कथा को देखुछु को केस रे फर्स्ट आर्टिकुलेट करा हला ठीक अछि स्पष्ट भाव रे प्रकाश पाइथिला गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण को केस रे ऑप्शन बी केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला okay which of the following was held to be part of basic structure in Indira Gandhi's versus Raj Narayan 1975 this is also your PYQ free and fair election right to property reservation policy uniform civil code को हबा हमरो free and fair election okay article 368 deals with कहा सहित deals करे article 368 emergency provisions amendment procedure of the constitution distribution of legislative power and formation of new state 368 हमरो कोन अछि ना amendment procedure of the constitution okay which type of constitutional amendment requires ratification by at least half of the state legislation okay amendment by simple majority amendment by special majority only amendment affecting federal provision and all amendment requires this okay amendment affecting federal provision specific majority versus state ratification okay the 24th amendment act 1970 was enacted primarily to kona restore parliament's power to amend fundamental rights after Goloknath ruling abolish privy purvey ठीक अछि then introduce DPSP precedents and reduce voting age answer कोन हि जिवो option A restore parliament's power to amend fundamental rights after Goloknath ruling okay which amendment is known as the mini constitution due to its extensive change हमें mini constitution को amendment को कहू 24 amendment 42 amendment 1976 44th amendment and 73rd amendment कहा को कहू mini constitutions mini constitution हमें 42nd व 42 amendment act 1976 the 73rd and 74th amendment 1992 primary deals with it option भी दबा पड़िबनी पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी जो हमारो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को देखाए ओके द एंटी डिफेमेशन लॉ इज कंटेन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंटी डिफेमेशन लॉ कोथि अछि 9th 10th 11th एंड 12th हमर हे जिवो कोन नट इन आवर 10th शेड्यूल अंडर द 10th शेड्यूल a member is not disqualified if the voluntarily give up party membership their party merges with another and 2/3 of the member agrees they vote against party which whip once and they abstain from voting कहबो option B their party merge with another and 2/3 of the member agree सेटा हमर 10th schedule अछि ठीक अछि member disqualify हेबेनी which schedule contains law related to land reform placed beyond judiciary review modified by the basic of doctrines 8th schedule 9th schedule 10th and 5th schedule through the latter modify of the basic doctrine कोथि अछि पिला माने option B in our 9th schedule okay एटा तो सेतने हां एटा आपण मानकर PYQ okay the 8th schedule of the constitution deals with amara 8th schedule कहा सहित deals करे anti defamation provision
official language recognized by the constitution, panchayati raj power, administrative of scheduled area. Option B, official language recognized by the constitutions. How many languages are currently listed in English 8th schedule? 8th schedule le ketata language ebe jaye achi? 8, 18, 20, 21 and 25. Ketata achi 8th schedule le amara 22 language. Okay. The 5th schedule deals with administration of scheduled area and scheduled tribe in which region? Northeastern state only. State other than Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, all union territories, only Jammu and Kashmir. अब पाखे कौन हिजबो? State other than Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Okay. The 6th schedule provides for autonomous district council primarily in Rajasthan and Gujarat, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, Odisha and Jharkhand, Kerala and Tamil Nadu. Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Ebe just Chicago discuss kala. Okay. Article 35A, which was struck down in 2019, has been introduced through kaha through introduce heitila? Yes, a constitutional amendment passed by Parliament, a presidential order under Article 370, Supreme Court judgment and state legislature resolutions. Answer कौन हबो? ना a presidential order under Article 370. Which body recommended the distribution of net proceeds of tax between union and state? Planning Commission, Niti Aayog, Finance Commission, Interstate. तो हमारा जिते बेला हमें बिल कथा बा टैक्स कथा कहूचो comes under the Finance Commission. Okay. Finance Commission is constituted under which article? को article under a Finance Commission बना हितला 275, 280, 282, 293. Answer is about 280. Okay. Article 356 President rule can be imposed on the ground of co-ground impose करा जिबा failure of constitutional machinery in state, financial instability in union, war with neighboring country, non-cooperation of judiciary, failure of constitutional machinery in a state. Okay. The maximum period of which president rule can continue subject to periodic parliamentary approval is generally kept at 1 year, 2 year, 3 year and no limit. आमर आंसर कौन होगा 3 year with condition after 1 year. ठीक है? The doctrine of collective responsibility is announced by the article 74, 75, 78 and 77. कौन होगा? Option 75 clause 3. Okay. The concept of judicial review in India derived primarily from which article? Judicial review co article was article 13, 32 and 226, article 14 and 19, article 352 and 360, article 245 and 246. Co article was article 13, 32 and 226. Okay. The National Judicial Appointment Commission NJSC Act 2014 was struck down by the Supreme Court because it violated federalism, it violated the independence of judiciary, a part of the basic structure, it was passed without special majority, it lacked presidential access. Answer haba option B. It violated the independence of the judiciary, a part of basic structure. Which of the following best describe India's form of government regarding the executive? Presidential system with fixed executive tenure, parliamentary system with collective responsibility to the legislature, semi-presidential hybrid system, direct elected prime minister system. Option B. Parliamentary system with collective responsibility to the legislature. Money bills defined under the article 110 can be introduced only in Rajya Sabha, Lok Sabha, either house a joint sitting, only in Lok Sabha. अच्छा मनी बिल रे राज्य सभा रो किछि भी हाथ न थाए within 14 days समाने रिटर्न करबा को बाध्य. ओके. Rajya Sabha power regarding money bill is limited to
amendment and returning within 14 days, rejecting them outright, indefinite delay, sending them to president for reconsiderations, amendment and returning them within 14 days. जदि 14 days भितर return न आसिला still सेटा both house रे pass हो जाए. Okay, then which mechanism resolve deadlocks between the two houses of parliament? Ordinary bills, presidential veto, joint sitting under the article 108, reference to the Supreme Court, and dissolution of the Rajya Sabha. Joint sitting under the article 108. Okay, the concept of single citizenship in India despite its federal structure was borrowed from federal structure कोठु आछि? USA, Britain, Canada, Switzerland. Federal structure by federalism, Canada. Okay, तो एटी पिला माने हमर क्लास सरीला. ओके, देखो एटा हला मोर व्हाट्सएप रो स्कैनर. आपण माने चाहिए ए स्कैनर थ्रू रो मोर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करि परिबे. जदि काहा को भी जॉइन करिवार अछि जस्ट ए स्कैनर को फॉलो करिके ग्रुप रे जॉइन करि परिबे. आ मु आपण मान को ऐड करिबे सेठी. आपण मानकर किछि भी डाउट हेले मते सेठी आपण माने पचारि परिबे. ओके, क्लियर? एटा व्हाट्सएप स्कैनर, एटा हमर टेलीग्राम रो स्कैनर. एठी आपण मानन को पीडीएफ पहुंची जिवो. ओके, ता सहित एटा हमर कोर्स डिटेल 1 month 249, 3 months 529 and 12 months 1799. ओके, ता सहित एटा मोर 𝐸𝐻𝐼P एटा हला मोर कोड. क्लियर? आ एटा हला मोर व्हाट्सएप ग्रुप. जे भी चाहिबे आपण जॉइन करि परिबे. ठीक अच्छे, क्लियर समस्त को? काली तो क्लास नहीं, द डे आफ्टर टुमोरो. यस, मो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आनिबी. आमर थरे डिस्कशन आउ 4टा यूनिट अच्छी तो सेटा सरी गला परे मो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ मैराथन आपण मानन सब्जेक्ट माने चैप्टर वाइज नहीं कि आसीबी. ओके, आ जहा को भी जहा किसी डाउट हैला आपण माने ऊपर थिबा नंबर रे कॉल करि परिबे. मोर किछि हेनी. एज आई ऑलवेज सेड मो मांकर कैंसर बाहर तो से कैंसर थ्रू जेहेतु जाउचंती समहाउ से तांकर चुट्टी सब काटी देइचंती. सी वाज वेरी एफेक्शनेटेड विथ हर हेयर तो मु भी सेति पे चुट्टी काटी देइची. मोर किछि हेनी. ओके, क्लियर समस्त को? ताले क्लास टा एठी रखुछु. काली पुनी आ गोटे क्लास रे हम भेट पड़िबा. टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे.